viewers, welcome to my channel and thank you for watching the videos and subscribing the channel. इस वीडियो में हम locus of chords with a given midpoint करेंगे. जैसे कि हम सेंट्रल कोनिकॉइड्स कर रहे हैं, तो सेंट्रल कोनिकॉइड की इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1. और अगर माना जाए कि कॉर्ड का मिड पॉइंट जो है, मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड इज अल्फा बीटा गामा. बीटा गामा से पास होने वाली इक्वेशन होगी स्ट्रेट लाइन x माइनस अल्फा अपॉन एल इज इक्वल टू वाई माइनस बीटा अपॉन एम इज इक्वल टू जेड माइनस गामा अपॉन एन इज इक्वल टू आर. तो अगर हम फिगर देखें कि ये कॉर्ड्स इस तरह से हैं और इसके मिड पॉइंट लें हम, तो इनका जो एक लोकस होगा वो कोनिक होगा. ये इलिप्स टाइप की फिगर होगी और ये सेंटर होंगे, सेंटर पॉइंट सेंटर होंगे. मान लीजिए कॉर्ड्स जो हैं डायरेक्शन दूसरी है कुछ, इट्स लाइक दिस. तो इनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे और फिर इससे लोकस बनाएंगे, तब भी ये कोनिक सेक्शन होगा. इट विल बी कोनिक सेक्शन, और जहाँ की मिड पॉइंट उसका सेंटर होगा. सो ये तो विजुलाइज करने की बात हुई. ये स्ट्रेट लाइन आर है लेट्स से. तो ये इस लाइन पर अगर हम पॉइंट देखें, ये होगा एल आर प्लस एल्फा एंड एम आर वाई इज इक्वल टू एम आर प्लस बीटा एंड जेड इज इक्वल टू एन आर प्लस गामा. तो ये पॉइंट इस लाइन पर लाई कर रहा है. अगर ये पॉइंट, दिस पॉइंट, इफ पॉइंट ए lies on the central conicoid, जिसे हम 1 से दिखाते हैं, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. सो ए इंटू एल्फा प्लस एल आर होल स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस एम आर होल स्क्वायर प्लस सी गामा प्लस एन आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1. इसको ओपन करें. सो ये आर स्क्वायर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी. सो आर स्क्वायर ए एल स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर प्लस 2r ए एल एल्फा प्लस बी एम बीटा प्लस सी एन गामा प्लस ए एल्फा स्क्वायर प्लस बी बीटा स्क्वायर प्लस सी गामा स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0. अब इससे हमें आर की 2 वैल्यूज़ मिलेंगी. और अगर हम इस फिगर को रेफ़र करें, तो मान लीजिए ये अल्फ़ा बीटा गामा है, तो और ये 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है. ये P1 पॉइंट है और ये P2 पॉइंट है, दिस पॉइंट. सो P1 P2 2 पॉइंट्स हैं. तो इस इक्वेशन से हमें डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of the line 1 and the above conicoid from the point तो ये P1 P2 जो हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 1 एंड अबव कॉनिकॉइड हो गए.
और ये जो डिस्टेंस हमें मिल रही है वो सेंटर, जो कि सेंटर अल्फा बीटा गामा पॉइंट है। सो एक तरफ प्लस आर होगी एंड दूसरी तरफ माइनस आर होगी, तो सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ आर, से R1 R2 दो वैल्यूज हैं, दो रूट्स हैं, ये ज़ीरो होगा समेशन ऑफ दिस। और ये कब होगा? माइनस बी अपॉन ए। सो दिस गिव्स माइनस बी अपॉन ए मीन्स ए एल अल्फा this term plus bm beta plus cn gamma is equal to 0. Now we have to find out the locus of the chords. So the required locus of the chords with alpha beta gamma as midpoint is obtained by eliminating element between equation 2 and equation, this is 3. So we will put in place of L x minus alpha. So A alpha x minus alpha plus B beta y minus beta plus C gamma z minus gamma is equal to 0. और इसे सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा A alpha x plus B beta y plus C gamma z is equal to A alpha square plus B beta square plus C gamma square. एंड दोनों साइड अगर हम -1 कर दें, वी सब्ट्रैक्ट हियर -1 and on this side also -1, and if we put which we say t is equal to s1, it means this side, left hand side is t and right hand side is s1. So this becomes t is equal to s1. Therefore the plane given by equation which we have replaced this equation, which we call 4, and equation 5. Equation 5 means which is t is equal to s1, this equation 5. This will meet these planes, either we give by equation 4 or 5, meets the conicoid in a conic and alpha beta gamma is the center of the conic. अब एग्जाम्पल्स करते हैं। First example, find the equation of the plane which cuts
x square plus 4y square minus 5z square is equal to 1 in a conic whose center is at the point 2, 3, 4. So as we have seen T and S1, so T is equal to A alpha x plus B beta y plus C gamma z minus 1, and S1 is A alpha square plus B beta square plus C gamma square minus 1. So here S1 will be alpha is 2, beta 3 square B plus 4 square C minus 1. So 4 alpha plus 9B plus 16C minus 1. So this is S1. We substituted the value of alpha, beta, gamma as 2, 3, 4, and we got this, and T is equal to x into 2 into A plus B into 3 into Y plus C into 4 into Z minus 1. So we have ABC from the ellipsoid from this conicoid, which is ax square plus by square plus cz square minus 1 is equal to 0. Sometimes we write it as S. So A is equal to 1, B is 4, and C is equal to minus 5. We put in this, it comes S1 is 4 plus 36 and 16C is minus 80 minus 1, 40, and this is 81, so minus 41, and T is equal to 2x plus 12y minus 20z minus 1 is equal to 0, and we put value of T, which is equal to S1. So this comes minus 41 minus 41 is equal to 2x plus 12y minus 20z, and minus 1 will be plus 1. So minus 40 is equal to, which is 20, x plus 6y minus 10z. So this is the equation. We can write it like this. This is the equation of plane which cuts the conicoid in a conic whose center was given. Second question is, find the center of the conic. And conic is x square upon 9 plus y square upon 16 plus z square upon 4 is equal to 1, 2x plus 2y minus z is equal to 3. Now we assume that alpha, beta, gamma be the center of the conic,
और कोनिक क्या है यहाँ पर? सेक्शन ऑफ द इलिप्सॉइड. दिस विल बी सेक्शन ऑफ द इलिप्सॉइड, जो गिवन इलिप्सॉइड है, by the plane, by this plane. This is plane and this is ellipsoid. तो अगर हम सेक्शन निकालें इस प्लेन से, इस एलिप्सॉइड का, तो एक कोनिक होगा जिसका कि सेंटर अल्फा बीटा गामा है. नाउ वी कैन राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द प्लेन सेक्शन हुज सेंटर इज अल्फा बीटा गामा. वो हम लिख सकते हैं t इज इक्वल टू S1 से. इक्वेशन ऑफ द प्लेन section whose center is अल्फा बीटा गामा. तो t इज इक्वल टू S1 से, और t इज इक्वल टू S1 हमें पता है. सो वी राइट वैल्यूज ऑफ t इज इक्वल टू S1. सो हियर वी राइट दिस t एंड दिस S1. ये वेल नोन है. A is 1/9, so x alpha upon 9 plus y beta upon 16 plus z gamma upon 4 minus 1. This is equal to t or S1, and this is equal to S1 is 1/9 alpha square plus 1/16 beta square plus 1/4 gamma square minus 1. So we put t is equal to S1, we get x alpha upon 9 plus y beta upon 16 plus z gamma upon 4 is equal to alpha square upon 9 plus beta square upon 16 plus gamma square upon 4. Now this equation, which is, we can say A, this is equation of plane. Equation of plane, and this is same as the plane. A is equal to this 2x plus 2y minus z is equal to 3. So minus 3. So comparing, this was given in the question. So comparing, we can write down alpha upon 9 upon 2 is equal to beta upon 16 upon 2, and gamma upon 4 is equal to minus 1, and this can be by the equal to under root alpha upon 9 square plus beta upon 16 square plus gamma upon 4 square upon under root 2 square plus 2 square plus 1 square is equal to lambda. So this gives alpha is equal to 18 lambda, beta is equal to 32 lambda, and gamma is equal to minus 4 lambda. And alpha, beta, gamma lies on the plane. So 2 alpha, given plane is plus 2 beta minus z, that is gamma is equal to 3. It means 2 into 18 lambda plus 2 into 32 lambda plus 4 lambda is equal to 3. So 36 lambda plus 64 lambda plus 4 lambda is equal to 3. This comes lambda is 3 upon 104. So the required center is
18 lambda so lambda is this 18 lambda. Now 32 lambda and minus 4 lambda. We can further simplify. This will be is prove that the center of section of ax square plus by square plus cz square is equal to 1 by the planes which are at a constant distance p from the origin lie on the surface. तो अल्फा बीटा गामा हम सेंटर ऑफ द सेक्शन मानते हैं जो गिवन एलिप्सॉइड एंड टी इज इक्वल टू S1 क्या होगी इक्वेशन ऑफ दिस सेक्शन of the sphere t is equal to S1. So ये होगी a x alpha plus b y beta plus c z gamma minus 1 is equal to a alpha square plus b beta square plus c gamma square minus 1. So इसे हम एक साइड ले आए टर्म्स को. सो दिस विल बी ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी बीटा स्क्वायर प्लस सी गामा स्क्वायर माइनस 1 कैंसिल हुए माइनस ए एक्स अल्फा प्लस बी वाई बीटा प्लस सी जेड गामा इज इक्वल टू 0 एंड डिस्टेंस दी गई है इस प्लेन की. दिस इज से ए distance of plane A from the origin is P. So P is equal to ax square because this is the constant term. So this is ax square a alpha square plus b beta square plus c gamma square upon this is d upon under root a square plus b square plus c square a alpha square plus b beta square plus c gamma square. So p square into a square alpha square plus b square beta square plus c square gamma square is equal to a alpha square plus b beta square plus c gamma square whole square. And now we take locus of the center alpha beta gamma. And this is the required answer.
Example, show that the line joining a point P to the center of a conicoid ax square plus by square plus cz square is equal to 1 passes through the center of the section of the conicoid by the polar plane of P. So we take point P and coordinates of this are x dash, y dash, z dash. And center of conicoids are alpha, beta, gamma. And conicoid is ellipsoid. And polar plane of P polar plane of P x dash, y dash, z dash with respect to the given conicoid is ax x dash plus by y dash plus cz z dash is equal to 1. एंड अल्फा बीटा गामा जो है सेंटर ऑफ द एलिप्सॉइड है, सेंटर ऑफ द सेक्शन, सेंटर ऑफ द सेक्शन ऑफ द गिवन एलिप्सॉइड, गिवन एलिप्सॉइड है by the plane 1. By the plane 1 means by the polar plane. Then the equation of the plane section can be written as, can also be written as t is equal to s1, or this will be a alpha x plus b beta y plus c gamma z minus 1 is equal to a alpha square plus b beta square plus c gamma square minus 1, and this will cancel out. So this is equation 2. Now equation 1, which is equation of polar plane, and equation 2, they are same.
same plane. So comparing gives alpha upon x dash is equal to beta upon y dash is equal to gamma upon z dash. And if we see the equation of the line joining the point P, which is x dash y dash z dash, to the center of the conicoid, center of the ellipsoid is origin, that is 0 0 0. So therefore remember, here we have center of the section of the given ellipsoid, which is alpha beta gamma, but center of the conicoid, which is ellipsoid, is origin. So line joining 0 0 0 and P point, which is x dash y dash z dash, will be x minus 0 upon x dash is equal to y upon y dash is equal to z upon z dash. If this line passes through the center of the section, if it passes through the center of the section, center क्या है, alpha beta gamma of the section, of the given conicoid, by the plane, that is one polar plane. Then we can write alpha in place of x, it will be alpha upon x dash is equal to beta upon y dash is equal to gamma upon z dash. Which is true by this equation. By virtue of equation A. Hence what we say, the line joining the line joining x dash y dash z dash to the center of the given conicoid passes through the center alpha beta gamma of the section. ये किस चीज़ का सेक्शन सेंटर है, ये किस चीज़ का सेंटर है, ये सेंटर है ऑफ द सेक्शन ऑफ द कोनिकॉइड by the polar plane one, that is the polar plane 1 we have written of P.
find the locus of centers of section ax square plus by square plus cz square is equal to 1, which touch alpha x square plus beta y square plus gamma z square is equal to 1. सो यहाँ पर कॉनिकॉइड ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर की फॉर्म में नहीं है, तो जो हम सेंटर लेंगे वो अल्फ़ा बीटा गामा ना लेके हम कोई और पॉइंट लेते हैं. लेट x1 y1 z1 ये पॉइंट है सेंटर ऑफ द सेक्शन, बी द सेंटर ऑफ सेक्शन ऑफ कॉनिकॉइड ax square plus by square plus cz square is equal to 1, and equation of this section is t is equal to s1 भी लिख सकते हैं, जहाँ पर कि हम देखते हैं a अल्फ़ा x, सो यहाँ पर अल्फ़ा बीटा गामा की जगह x1 y1 z1 आएंगे. सो a x x1 प्लस बी वाई बीटा की जगह y1 प्लस सी जेड गामा की जगह z1 माइनस 1 इज इक्वल टू a x1 स्क्वायर, बी बीटा की जगह बी y1 स्क्वायर प्लस सी गामा की जगह z1 स्क्वायर माइनस 1, ये कैंसिल हो जाएंगे. सो दिस इज a x x1 प्लस बी वाई y1 प्लस सी जेड z1 is equal to axm square plus by1 square plus cz1 square. अगर plane this is a plane A, if plane A touches the conicoid, क्वेश्चन में दिया गया है अल्फ़ा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा वाई स्क्वायर प्लस सी गामा जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देन इक्वेशन कंडीशन ऑफ टेंजेंसी एल स्क्वायर अपॉन ए प्लस एम स्क्वायर अपॉन बी प्लस एन स्क्वायर अपॉन सी इज इक्वल टू पी स्क्वायर होती है. तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इक्वेशन है ए एक्स एक्स वन प्लस बी वाई वाई वन प्लस सी जेड जेड वन इज इक्वल टू ए एक्स वन स्क्वायर प्लस बी वाई वन स्क्वायर प्लस सी जेड वन स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल टू पी. अगर हम कंपेयर करें एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड से, सो एल इज इक्वल टू ए एक्स वन, m is equal to by1 and c is equal to cz1 is equal to n. So जो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है एल स्क्वायर अपॉन ए प्लस एम स्क्वायर अपॉन बी प्लस एन स्क्वायर अपॉन सी इज इक्वल टू पी स्क्वायर, इसमें वैल्यूज रख दी. सो ए एक्स वन होल स्क्वायर एंड ए बी सी जो क्वेश्चन है दिस इज पी स्क्वायर. क्वेश्चन है उसमें दिया गया है अल्फ़ा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा वाई स्क्वायर प्लस गामा जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ए इज इक्वल टू अल्फ़ा, बी इज इक्वल टू बीटा एंड सी इज इक्वल टू गामा. सो अपॉन अल्फ़ा प्लस बी वाई वन अपॉन बीटा इज प्लस सी z1 square upon gamma is equal to p is ax1 square plus by1 square plus cz1 square whole square. लोकस ले लेते हैं x1 y1 z1 का. सो द रिक्वायर्ड लोकस ऑफ x1 y1 z1 is
square x square upon alpha plus b square y square upon beta plus c square z square upon gamma is equal to ax square plus by square plus cz square whole square. So यही required answer